students. Welcome in Science Education channel. अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही अच्छी वीडियोस फायदेमंद आपके लिए लाते रहेंगे. If you are new to this channel, then definitely subscribe to our channel because in the coming days we will keep bringing such good videos beneficial for you. Let us proceed towards this story of ours and request you to listen carefully and take full advantage of it and learn a lot from it. चलिए हम अपनी इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपसे निवेदन है कि आप इसे गौर से सुनें और इससे भरपूर फायदा उठाएं और इससे बहुत कुछ सीखें. हमारी कहानी का नाम है Androcles and the Lion. Androcles and the Lion. Long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master. However, एंड्रोकल्स और शीर लांग. बहुत पहले एक मेहरबान, शरीफ और शाइस्ता आदमी रहता था जिसे एंड्रोकल्स कहते थे. लेकिन इसका बड़ा जालिम मालिक था. इन दिनों बादशाह, अमरा और दूसरे अमीर लोग गरीबों को अपने गुलामों के तौर पर इस्तेमाल करते थे. एंड्रोकल्स एक गुलाम था. गुलामों को अपने आकाओं के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता था. इन्हें वही करना पड़ता था जो इनके आका इन्हें कहते थे. इन्हें कोई आज़ादी नहीं थी, कोई हुकूक नहीं थे. वो अपने आका से नाखुश होते हुए भी इसे छोड़ नहीं सकते थे. वो कानून के पाबंद थे कि वो अपने आका की अताअत करें. ताहम Androcles did his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. एंड्रोकल्स ने अपने संदिल, शरीर मास्टर किया. इसका आका अपने गुलामों को भूखा मारता था और अक्सर कोड़े मारता था. एंड्रोकल्स ने महसूस किया कि ऐसे मालिक की खिदमत करने से मौत भी बेहतर है. वो किसी अच्छे मौका की तलाश में रहा. पहला मौका मिलते ही वो अपने जालिम आका के चुंगल से बच निकला. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. अब अगरचे एंड्रोकल्स इस तरह भाग गया था, लेकिन वो बुज़दिल नहीं था. इसने एक जंगल में पनाह ली. वो जंगल में घूमने वाले दरिंदों से नहीं डरता था. इसे कोई इतराज नहीं था कि इसके सर पर छत नहीं थी. वो खुश था कि वो परिंदे की तरह आजाद है जहां चाहे जाने के लिए. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled, nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक इसका सामना एक शेर से हो गया. इसका पहला रद्देमल ये था कि वो पलट कर भागे. लेकिन फिर इसने देखा कि शेर इसे देखकर आगे नहीं बढ़ा. ये ना तो गर्जता है, ना गर्जता.
है। दरहकीकत इसने इसकी तरफ इस तरह रहीम से देखा जैसे इसे बहुत तकलीफ हो रही हो। Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. एंड्रोकल्स रुक गए। फिर वो बहुत एहतियात से कदम कदम पर शीर की तरफ बढ़ा। शीर ने कराहा और सरगोशी की। प्लीज मेरी मदद करें, इसकी आंखें बोल रही थी। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. जब एंड्रोकस करीब आया तो शीर ने अपना सर नीचे किया और अपना पंजा चाटने लगा। फिर एंड्रोकस ने देखा कि शीर का पंजा जख्म और सूजन है। Closer look, and on a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. करीब से देखने पर एंड्रोकस ने देखा कि शीर की अंगुलियों में से एक को एक बड़ा कांटा चुभ गया है। तो ये शीर की परेशानी का सबब है, एंड्रोकस ने सोचा। एंड्रोकस ने सारी हिम्मत जमा करते हुए जख्मी पंजे की तरफ अपना हाथ आहिस्ता से बढ़ाया। इसे डर था कि अगर इसने इसके फूले हुए पंजे को छू लिया तो शीर इस पर हमला कर देगा। लेकिन शीर इसकी नेक नियत को समझ रहा था। Took the paw in his left hand. Deftly, he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm, as if to show gratitude. एंड्रोकस ने पंजा अपने बाईं हाथ में लिया। बड़ी तदबीर से इसने कांटा निकाला। फिर अपने लिबास का एक टुकड़ा फाड़कर मेहरबान आदमी ने शीर के जख्मी पंजे को बांध दिया। इसकी हैरत पर शीर ने फिर इसका बाजू चाट लिया, गोया शक्र अदा करना हो। Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day, he would clean and dress the lion's wound. Soon, the lion was able to move about. Many times, it followed Androcles, wherever he went. एंड्रोकस शीर के साथ इस वक्त तक रहे जब तक वो दोबारा ना चल सके। वो जंगल में शिकार करता और बेबस दरिंदे के साथ खाना बांटता। हर रोज वो शीर के जख्म को साफ करके मरहम पिटी करता। जल्द ही शीर इधर इधर जाने के काबिल हो गया। कई बार ये एंड्रोकस का पीछा करता था, वो जहां भी जाता था। In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. उसी दौरान एंड्रोकस के आका ने हुक्काम से शिकायत की कि इसका गुलाम एंड्रोकस भाग गया है। एंड्रोकस को पकड़ने के लिए हर तरफ सिपाही भेजे गए। इन्होंने इसे बुलंद व बाला तलाश किया लेकिन वो ना मिला। आखिरकार वो जंगल में पहुंचे जहां एंड्रोकस रहते थे। It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged.
हुआ यूं कि इस दिन एंड्रोकस अकेला ही बाहर निकला था जबकि शीरगार के पास आराम कर रहा था। दोनों फौजी के हथे चढ़ गए। फौजी इन्हें वापस शहर ले गए। इन्होंने एंड्रोकस को जेल में जंजीरों में जकड़ दिया। शीर पिंजरे में बंद था। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts, as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles, too, was to be thrown to the wild beasts. इन दिनों जो लोग संगीन जुर्म के मुर्तकिब पाए जाते थे इन्हें सजा के तौर पर जंगली दरिंदों को खिलाया जाता था। अपने आका से भागना इस जमाने में बहुत संगीन जुर्म था, इसलिए एंड्रोकस को भी जंगली दरिंदों के पास फेंक दिया जाना था। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. मुकर्ररा दिन पर शहंशाह सर्कस पहुंचा और इसकी जगह ले ली। हुजूम ने जोरदार नारे लगाए। बगल बजाने वालों ने सुर फूंका और एंड्रोकस को मैदान में लाया गया। इसकी जंजीरें बंद थी। इसने कमजोरी और मायूसी महसूस की। इसे यकीन था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear. But he put up a brave front. मुखालिफ सिरे पर एक गेट खड़ा किया गया और एक जबरदस्त शीर को मैदान में छोड़ दिया गया। इसे मजीद सख्त बनाने के लिए भूखा रखा गया था। एंड्रोकस खौफ से भरा हुआ था, लेकिन इसने एक बहादुर मुहाज खड़ा कर दिया। The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. शीर ने एंड्रोकस को देखा और दौड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। लेकिन अचानक ये अपनी पटरियों में रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ऐसा लगता था कि इसका सारा गुस्सा पिघल गया है। एंड्रोकस ने भी ये देखा। हर दोस्त ने दूसरे को पहचान लिया। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. सब हैरान रह गए। शीर फिर से एंड्रोकस की तरफ लपका, लेकिन जब वो इसके पास पहुंचा तो इसने चीखना शुरू कर दिया और इसके खिलाफ अपनी नाक रगड़ना शुरू कर दी। एंड्रोकस ने शीर को गले लगाया। वो राहत और खुशी से रो पड़ा। The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. सामीन बशमूल शहंशाह ने इस हसीन नज़ारे को बड़ी हैरत से देखा। लोगों ने एंड्रोकस को खुश करना शुरू कर दिया और इसकी रिहाई का मुतालबा किया। शहंशाह ने एंड्रोकस से शीर के अजीब रवैये की वजाहत करने को कहा। जब इसने सारा किस्सा सुना तो शहंशाह भी इंसान और हैवान की शक्र गुजारी और दोस्ती से मुतासिर हुआ।
इसने हुक्म दिया कि एंड्रोकस को आजाद कर दिया जाए। वो अब गुलाम नहीं रहेगा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. जब शहंशाह ने एंड्रोकस से पूछा कि वो और क्या इनाम चाहते हैं तो एंड्रोकस ने जवाब दिया कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है कि शीर भी आजाद हो जाए। दोनों दोस्त आजाद जिंदगी गुजारने के लिए जंगल में वापस चले गए।